Hello and good evening, everyone. Good evening, Karishma. So, how many of you attempted today's question? आप में से कितने लोगों ने आज का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? Good evening to all. Hello and good evening, everyone. So, let's start our session formally. So, welcome to today's daily answer writing session. And let me tell you briefly हम इस इनिशिएटिव में क्या करते हैं. मंडे टू फ्राइडे आपको डेली 11 AM पे एक क्वेश्चन मिलता है, राइट? एंड यही क्वेश्चन आपको जो है बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं एट 6 PM. वी डिस्कस इट एट 6 PM. और प्लस आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर लिख के एक टेलीग्राम ग्रुप है, देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, डेली आंसर राइटिंग ग्रुप, जिसका लिंक आपको इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो डेली आंसर राइटिंग करके टेलीग्राम ग्रुप है, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो. उस क्वेश्चन का आप जो है आंसर वहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है? एंड वी ट्राई टू रिव्यू. आज हम एक क्वेश्चन का आंसर रिव्यू भी करेंगे, ओके? एंड before we come on to our question, let me briefly discuss about our new course Prayas for Answer Writing. So we have launched a course Prayas for Answer Writing. In this course हम आपको 60 days में GS 1 to 4 की आंसर राइटिंग मास्टर करवाएंगे. एंड what would be the most important thing is कि हम लोग जो है एक कंसिस्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी थ्रू लाइव आंसर राइटिंग सेशंस. तो मंडे टू सैटरडे आपके 60 डेज तक जो है लाइव आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, ओके? दैट वुड बी देयर. और इसमें आप इमीडिएट लाइव सेशन में आंसर्स लिखोगे एंड उस दैट वुड बी फॉलोड बाय इमीडिएट डिस्कशन, ओके? सो दैट देन एंड देयर आपको एक इंस्टेंट फीडबैक भी मिलेगा. आपको कुछ पूछना है तो इट्स अ लाइव सेशन, यू कैन आस्क विद अस. सो आई वुड बी टेकिंग द क्लासेस हियर, Saurabh sir would be taking the classes here, and our other faculties like Sitendra sir and Prashant sir and other faculties would be taking the classes under this initiative. Plus आप जो आंसर लिखते हो उसको आप सबमिट कर सकते हो फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन एंड फीडबैक. ऑल्सो ये इनिशिएटिव हमने जीएस वाइज यानी जीएस 1 2 3 4 इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है सो दैट एक शॉट में आपका एक जीएस पूरा कवर हो जाएगा. प्लस देयर इज अ 15-day रोलिंग प्रोग्राम, यानी 15 डेज में एक जीएस का एंटायर आपके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, ओके? फिर नेक्स्ट 15 डेज में जीएस 2. सो मान लो आप बीच में भी कभी इनरोल करते हो, तो अगर मान लो आपका जीएस 1 छूट भी गया तो इट्स अ रोलिंग प्रोग्राम, तो आगे जाके आपका जीएस 1 दोबारा आ सकता है. सो कैन एंटर एट एनी टाइम. आप इस इनिशिएटिव में किसी भी टाइम पे एंटर करोगे, यू डोंट हैव टू वरी कि आपका कुछ भी पोर्शन छूटेगा. एंड लास्टली ये जो लाइव आंसर राइटिंग सेशन है जिसमें आपसे आंसर लिखवाए जाएंगे, वहां पे एक टाइम बेस्ड वे में आपसे आंसर लिखवाए जाएंगे, ओके? एंड फर्दर जब आफ्टर 60 डेज जब आप एक यू डेवलप योर स्किल टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ आंसर राइटिंग, then you start, there is phase 2 and phase 3 of this program where you start applying those skills, जहां पे आप उन स्किल्स को अप्लाई करते हो इन अ रियल एग्जाम लाइक सिचुएशन. तो फेज 2 में 8 मिनी टेस्ट होंगे एंड फेज 3 में जो है आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जहां पे ये जो है आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल एक रियल एग्जाम सिचुएशन में अप्लाई करते हो, ओके? नाउ लेट्स कम ऑन टू आवर क्वेश्चन, ओके? तो आप में से कितने लोगों ने इसका आंसर लिखा? एंड I hope you do know that this was a PYQ. How many of you have written answer to this question? So good evening Afreen, good evening Shyam Singh, good evening Rahul. Okay, तो अगर ये क्वेश्चन देखें सो अगेन इट वाज अ PYQ. अगर जिन्होंने मीन्स 2023 दिया होगा तो ये एथिक्स के पेपर से है. एंड सी हमारा फोकस ज्यादातर PYQs की तरफ इसलिए रहता है बिकॉज दे आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर दिस एग्जाम. अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके PYQs अगर आप कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपने वो टॉपिक एक अच्छे सही तरीके से एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम पढ़ा है. इट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्वाइट लॉजिकल थिंग, बट what I found very what I could say surprising is कि लोग जानते हैं ये करना है but not many people do this, okay? So one tip for you is please integrate PYQs in your preparation.
Now, if we see this question, let's start with our step one. So, step one talks about corruption is manifestation of failure of core values in society, right? So, corruption, failure of core values in society, and what measures can be taken to uplift these core values. Okay, क्या measures लिए जा सकते हैं to uplift these core values? So, we have broken down this question into three parts. One is that there are, what is the main aspect of this question? इस question में what is the main aspect? So this is one, this is two, this is three. तो 1 2 3 में से आपको क्या लगता है कि मेन एस्पेक्ट कौन सा है जिसपे हमारा फोकस रहना चाहिए? What is the main aspect of this question? What is the main demand of this question? Please tell. So what is the main aspect? So the main aspect is centered around core values and how their failure leads to corruption. Okay? So step one is we understand that it is mainly about the core values of the society and how its failure lead to corruption, right? And what measures we can take to basically uplift these values, right? तो मेन एस्पेक्ट ये है. तो जब ये है तो हमारा इंट्रोडक्शन किससे शुरू होगा? इंट्रोडक्शन वुड बी समथिंग विच वुड एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट while emphasizing core values. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप एक्सप्लेन करोगे इसको. मेनली ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करोगे. ठीक है, तो यू कुड राइट एवरी, सो आप लिख सकते हो, you could write down, okay, that every society has certain core values. Okay, so you could write down that every society has certain core values like tolerance, empathy, compassion, honesty, etc. Right? Okay, and these values guide the behavior or the actions. These values guide the behavior or the actions of the people in the society for collective well-being. Okay, that, and plus now you write, but many times we have seen, or but in recent times we have seen, failure, or you could say weakening of these values leading to corruption in society. Okay, now यहाँ पे एक पॉइंट मैं emphasize करना चाहता हूँ. And corruption in society, you can write that is deviation from the, ethically or morally acceptable societal values. Okay? अब देखो यहाँ पे एक चीज आई वांट टू पॉइंट आउट कि इसको इन एथिक्स कोई एक स्टैंडर्ड वे नहीं है, बट स्टिल एथिक्स में भी अगर आपको ज्यादा मार्क्स फेच करने हैं तो आपको अपने आंसर को थोड़ा सा ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेना पड़े. यू वुड हैव टू टेक अ बिट ऑफ ब्रॉड इंटरप्रिटेशन. अगर आप इसको सिर्फ करप्शन, अगर आप सिर्फ सोचते हो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में है सोसाइटी में, तो दिस इज अ लिमिटेड पर्सपेक्टिव. करप्शन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है. करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन में तो होता ही है, दैट इज वन एस्पेक्ट.
ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो बॉडी में आएंगे जहां पे हम शो करेंगे कि कैसे वैल्यूज वीकनिंग हो रही है, फेलियर हो रही है सोशल वैल्यूज, एंड इट इज लीडिंग टू करप्शन, राइट, दैट विल एड्रेस। बट करप्शन आपका सोशल मीडिया पे भी होता है, जहां वॉइसेस प्रमोट होते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन। आपका करप्शन जो है, इट इज इन पब्लिक ऑल्सो, जनरल पब्लिक, अडॉप्टिंग वॉइसेस लाइक स्मोकिंग। ओके, corruption is there also, like non law abiding citizens. Up some, if a citizen is jumping a red light, that is also a way of form of corruption. Corruption politics में होता है. In politics you have corruption in form of criminalization of politics. Corruption economy में है. In economy you have corruption in form of crony capitalism. Okay, so please, I would say कि आप थोड़ा सा whenever in ethics you are trying to interpret, थोड़ा सा broad interpretation लोगे, so that would definitely fetch you more marks. Okay, now this is introduction. Now when we come on to body, हालांकि I would expect कि मेरा introduction लिखते हुए थोड़ा बड़ा हो गया, you should further minimize it. थोड़ा सा आप यहीं पे लिख के, every society has certain core values which guide the behavior of the people, and weakening of these values many times leads to corruption in society, either be in administration, politics, economy, or even in the social behaviors like hate speech. Hate speech क्या है? आपकी जो वैल्यू है टॉलरेंस की, आपकी टॉलरेंस की वैल्यू वीकन होती है सोसाइटी में, तो हेट स्पीच होता है। नाउ दैट इज अ करप्ट बिहेवियर बिकॉज इट इज एक्चुअली हार्मिंग दी सोसाइटी। ठीक है, यही चीज हम बॉडी में लिखेंगे। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं बॉडी में। तो हाउ वुड यू स्ट्रक्चर, इसको कैसे स्ट्रक्चर करोगे? ओके, तो व्हेन इट कम्स अबाउट दिस, तो यू टेल इनफैक्ट चाहे तो आप ये वाला एस्पेक्ट बॉडी में इंक्लूड कर सकते हो। यू कैन इंक्लूड दिस एस्पेक्ट इन दी बॉडी। आप मेन इंट्रोडक्शन कोर वैल्यूज पे सेट करो, इतना लिख दो, और इसको बॉडी में लिखो। ठीक है, फिर यू टेल हाउ करप्शन इज, अब ये बताओगे आप, मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, और ये कैसे बताओगे? ये आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताओगे। यू विल टेल दिस थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आप कैसे बताओगे? यू विल टेल दिस थ्रू एग्जाम्पल्स। तो एथिक्स में याद रखो, कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन करनी हो, बतानी हो, द बेस्ट वे टू डू इट इज, क्योंकि एथिक्स इज अ बिट सब्जेक्टिव, तो द बेस्ट वे टू डू इट कि आप एग्जाम्पल लो। अब हाउ करप्शन, तो देन यहाँ पे आप लिख सकते हो, हियर यू कैन राइट कि ओके, many times we see there is, whenever there is failure, this failure can be seen. So failure of core values leading to corruption, right, in can be seen in various spheres। और फिर आप यहाँ पे आ जाओ, आप ए लिखो, सोशल स्फीयर। तो देर इज डिक्लाइन ऑफ values of tolerance, okay, values of tolerance, compassion, empathy, right, or values of what we could say fraternity, ये आपके उसमें मेंशन, दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज जो आपके किसमें मेंशनड है? कैन एनीबडी टेल मी वेयर दिस वैल्यू ऑफ फ्रेटर्निटी इज मेंशनड? कहां पे मेंशनड है? पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहां पे मेंशनड है? किसी को पता है कहां पे मेंशनड है? सो यू शुड टेल दैट, एक्चुअली वो चीजें आप यूज करोगे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस लीडिंग टू व्हाट? हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, राइट, ऑनलाइन ट्रोलिंग, एंड फिर आप ब्रीफली एक लाइन ये भी लिखोगे कि ऑल दीज activities जो because of decline of values, what it is doing, it is weakening the social fabric and damaging the society. Okay, so it is weakening the social fabric and damaging the society. B, अब देखो ये आपके ऊपर है। सी,
I had seen a very interesting comment yesterday. We are not writing detailed answer, but see again, कई बार answer writing में the writing things is not the main thing. It is forming the mental structure, understanding the क्वेश्चन को सही से समझना, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना और एक सही मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म करना और उसी के बेसिस पे सही इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बनाना, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा. ओके. देन इन पॉलिटिकल स्फीयर we see criminalization of politics, criminalization and use of money power in politics. तो ये क्या है, सोशल स्फीयर में कौन सी वैल्यू डिक्लाइन हुआ है? दिस शोज डिक्लाइन इन इंटीग्रिटी ऑफ द वोटर. दिस शोज कि लोग, पीपल आर नॉट वोटिंग फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल. उनको अगर ब्राइब दो, सो अगर एक वोटर को आप ब्राइब दे रहे हो, राइट, यू आर गिविंग हिम मनी टू वोट फॉर हिम और हर, राइट, so then it shows decline in integrity of the voter as well as the political parties, right? and इसका भी क्या इम्पैक्ट होता है? it leads to corruption in administration. तो आप यहाँ पे सी एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर लिख सकते हो, राइट. यहाँ पे आप करप्शन में मेजर, देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट स्कैम्स, 2G स्कैम, कोल स्कैम, राइट. अगेन दिस शोज डिक्लाइन इन वैल्यू. एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज आप सबको पता होगी, राइट, लाइक सेल्फलेसनेस and objectivity. We see this is declining in bureaucrats. In fact, यहाँ पे rather than this there is an interesting concept. ये एक concept में दे रहा हूँ, ये आप ethics के पेपर में बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो. Sanskritization of corruption. Okay. Do you know what does this mean? What does Sanskritization of corruption mean? It means basically जो bureaucrats है, जो corrupt bureaucrats है, they are amassing huge wealth through corruption and because of that they are getting social reputation. corruption से जो पैसा है उससे उनकी social reputation बन रही है. So basically society is incentivizing corruption. Everybody is now trying to emulate them कि हम लोग भी किसी तरीके से wealth ले ले. It doesn't matter how we are taking that. Okay, so there is Sanskritization of corruption. Okay, that means that corruption is being not only normalized, but in fact, people who are gaining wealth and fame through corruption, they are being gaining social reputation, recognition, right? Okay, that is there. So ये 3-4 में लिख लो, डी आप इकोनॉमिक स्फीयर लिख लो. एंड आई वुड से देखो, यूज टेबल हियर. यहाँ पे टेबल का यूज करना है, ठीक है. यू हैव टू यूज टेबल हियर, ठीक है. टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो ये सब चीजें बहुत ही ब्रीफ कंसाइन में, क्योंकि याद रखो 150 वर्ड्स का है, ठीक है. कीप इन माइंड इट्स 150 वर्ड्स. ओके. फिर इकोनॉमी में जैसे आई हैव टोल्ड यू, क्रूनी कैपिटलिज्म, या फिर कई बार जो है फॉल्टी प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना, राइट, या कंज्यूमर्स को ठगना, ये सब चीजें जो है, you must have seen in this in case of some big edtech companies who are mis-selling their products, trapping poor and poor and जो marginalized sections है, weak sections है उनको. Now let's come on to the measures. So what measures we can take to uplift the core values in society? So basically, we can take various measures to strengthen, honesty, integrity, tolerance in society. These measures can be legal measures. Now, legal measure can include, laws against unethical, against corruption, and strict enforcement of those laws. See, एक तो जो गलत चीजें हैं सोसाइटी में, उनके अगेंस्ट लॉज होने चाहिए, फर्स्ट. And secondly, there should be strict enforcement of those laws. Example of this would be
कि we see that gender equality was on decline. So because of this, you all must have heard of Vishaka case and Vishaka guideline, then Prevention of Sexual Harassment of Women Workplace Act, right? So this law was brought in against what kind of corruption? Against, again, mistreating women at workplace is seen as a kind of corruption where it shows decline in which kind of core value? Gender equality, okay? Respect for women, okay, and their strict enforcement. Second could be your social measures, which would include education, emphasizing moral education in schools, in schools and colleges, okay, right? In schools and colleges, then you can have, apart from education, a social recognition. तो लाइक गुड सेमेटेरियंस होते जो लोग हेल्प करते दूसरे लोगों को, दे आर गेटिंग सोशल रिकग्निशन. इसी तरीके से जो लोग सोसाइटी में वैल्यूज अपहोल्ड करते हैं, राइट, हु आर अपहोल्डिंग दी वैल्यूज, राइट, दे शुड बी दी रोल मॉडल्स. So people who are upholding the core values of society should get social recognition so that they become, so that, and this could include administrators as well, okay, so that they become role models for the society, right? And then it could also come up as social campaigns, okay? Social campaigns. So India against corruption, IAC एक campaign था against corruption. So it was a campaign against corruption. It created awareness against people about the corrupt practices that is going on, right? Then third would be, economic measures. So basically, in economic measures, you should say that ethical behavior or behavior which upholds the core values should be even economically incentivized, right? So ethical behavior should be incentivized, whereas unethical behavior should be penalized monetarily, राइट? सो जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, आप रेड लाइट तोड़ते हो, यू ब्रेक, कोई जंप करता है तो एक मॉनेटरी फाइन होता है, ओके, दैट इज देयर. Fourth, you could even say, here, like this, even you could include in social media, or you could say technological measures, जहाँ पे आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, इसकी बात कर सकते हो, right? And you could particularly tell how it could be used in a positive way as well. Negative way में use हो रहा है, it could be used in a positive way as well, ठीक है? And then you come on to conclusion that a society having strong core values will be corruption free and will be closer to attaining, goals of social, economic and political justice. See, it's up to you. Conclusion में आप कुछ भी लिख सकते हो. See, social, economic, political justice क्यों लिया मैंने? Preamble. So see, preamble gives you constitutional values. ठीक है? Right? Social, economic, political justice and equality. These are your what? Constitutional values, right? Constitutional goals of a society. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ये गोल सेट किए हैं
The society should be just socially, economically, politically. There should be equality of thought and expression. Now see, आप में से काफी लोगों ने टेलीग्राम पे आंसर लिखा था एंड आई हैड सीन दिस ओके. तो मैंने टेलीग्राम पे आपके आंसर्स भी देखे थे राइट. सो कुछ लोगों ने इसको जो है थोड़ा सा नैरोली इंटरप्रेट किया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया. दैट इज ऑल्सो ओके. दैट इज ऑल्सो ओके, बट अगर आप ब्रॉडली इफ यू नो कीप दिस इन माइंड कि मुझे ब्रॉडली इंटरप्रेट करना है, देन मे बी यू कुड गेट मोर कंटेंट, मोर पॉइंट्स, और एग्जामिनर को भी सही लगेगा इन द सेंस की यस दिस एस्पिरेंट अंडरस्टैंड्स दी नॉट ओनली ऑन द सरफेस लेवल कि बस एक नोट बनाया और ऊपर ऊपर का समझ लिया कि कि एक टॉपिक पे 200-250 वर्ड समझ लिए, बस वो नहीं, बट यू अंडरस्टैंड इट एट अ डीपर लेवल. ओके. और एथिक्स में मेनली जिस नेचर के क्वेश्चन से यही टेस्ट किया जाता है. ओके. so this is one answer we have here. So again, a good introduction where the values are explained, but I would say देखो कई बार ये भी मैटर करता है, आप यहाँ पे इसको कोर वैल्यूज बोलते हो. कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आर फंडामेंटल बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स व्हिच गाइड द बिहेवियर, राइट. थोड़ा सा इट्स अ वेरी माइनर थिंग ऑफ प्रेजेंटिंग, बट यस अगर आप उससे शुरू करते तो जो भी पढ़ता उसको लगता कि यस ये डायरेक्टली क्वेश्चन को एड्रेस कर. ओके. बट स्टिल इट इज गुड, right, and very rightly the core values are given here. Okay. Now corruption are very good. So this question I have chosen to show this kind of innovation. Okay. See this, the idea that I told you about. See, I am not perfect at translating, so I even learned from you. So the idea of presenting that information in tabular form, क्योंकि आपके पास 10 मार्क्स है 150 वर्ड से और टाइम भी 7 मिनट है मैक्सिमम. तो जब कम टाइम है, कम वर्ड्स है, तो उसमें आप बड़े बड़े पैराग्राफ लिखना नहीं अफोर्ड कर सकते हो. तो वहां पे टैबुलर फॉर्म बड़ा काम में आता है कि आपकी बात को बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज वे में कन्वे करने का, एंड दिस इज राइटली हाईलाइटेड. ओके. जैसे एम्पैथी, होल्डिंग मनी, सो वेरी गुड इनोवेशन. दिस वुड certainly fetch you marks. Okay. Please keep that in mind. Then next is, नाउ यहाँ पे एक मिस्टेक आपने कर दी अगेन, विच आई एम हाईलाइटिंग अगेन अगेन. देखो मेजर्स को इस तरीके से आपको नहीं एड्रेस करना चाहिए था, और यहाँ पे जैसे आपने एड्रेस किया है थोड़ा सा, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंटेंट बट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन. तो यू मे हैव गिवन मोर पॉइंट्स, बट द थिंग इज कि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंटली इसको प्रेजेंट करते, राइट, तो यस यू हैव अ वे, बट थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड वे में करते, maybe you could have even presented this in a tabular form. Okay. You could have presented this in a tabular form. So that is good. See, कभी कभी डायग्राम्स ऐसा नहीं कि हर जगह आप छाप दो, राइट. थोड़ा सा उसका रेलिवेंस भी देखो, जहाँ है सही वहां पे डेफिनेटली यूज करो, बट समटाइम्स यू मे प्रेजेंट दिस इन अ टेबुलर फॉर्म और किसी सिंपल इन अ पॉइंट वाइज फॉर्म, दैट वुड हैव सफाइस्ड. Okay. And lastly, concluded correctly, to effectively tackle corruption, we need to work on the existing mechanism for strengthening core values and example Nolan values. So this is good enough. Okay. So this is also a decent conclusion. Okay? That is it. So I hope with this you got a idea. So again, आपकी आज की learning है कि जब आपके पास words कम हो, when you have less number of words, right, and lot to write, use tables. Okay. So with this, let's conclude our session then. And so I hope this was useful. This discussion was useful to you. And again, remember, next time when you encounter a situation while answer writing, जब आपको बहुत सारा लिखना है but time कम है, word limit कम है, use tables. Okay. So let's conclude this session, and I hope this session was